So good morning my dear juniors, I hope you all are fine with the blessings of God. In this video we will discuss the questions of unit 3 and let's start with the first SAQ question. The question is asking us about the difference between blood plasma, about the difference between the blood and the plasma. So what is the difference between blood and the plasma? Blood is a complex fluid tissue composed of a plasma and it is formed of elemental corpuscles which include red blood, white blood cell and platelets. Plasma is the liquid portions of the blood in which the formed elemental corpuscles are absent. का मतलब है blood एक ऐसा complex tissue है जो क्या क्या compose करेगा? Plasma, formed element corpuscles, plasma, formed element corpuscles और red blood cell, white blood cell, platelets इन चीज़ों को वो क्या करेगा? Consist करेगा. It will contain दिस टाइप ऑफ सेल्स. बट प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है जहाँ पर कोई फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं और ना ही कोई कॉर्पसल्स होता है, यानी यहाँ कॉर्पसल्स एब्सेंट होते हैं. यहाँ पे कॉर्पसल्स एब्सेंट होते हैं. नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड. हमें एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में डिफरेंशिएट करना है. सो एज अ फ्लूइड जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो फ्लूइड विद इन द सेल दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसको ICF बोलते हैं, एंड द फ्लूइड आउटसाइड द सेल इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जिसको ECF बोलते हैं. यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो आउटसाइड द सेल है. द फ्लूइड विच इज आउटसाइड द सेल इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड विच इज इनसाइड द सेल इज अ इंट्रासेलुलर फ्लूइड. थर्ड नंबर क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग में RBC का हो जाएगा हेमोग्लोबिन, एसिनोफिल का एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स, बेसोफिल का बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स एंड लिम्फोसाइट्स का ए ग्रेनुलोसाइट्स. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 स्टेप्स ऑफ होम्योस्टेटिस. होम्योस्टेटिस का हमें 2 स्टेप्स को बताना है. सो 2 स्टेप्स इसमें से क्या है? सबसे पहला वाला है प्राइमरी हेमियोस्टेसिस. दूसरा वाला है सेकेंडरी हेमियोस्टेटिस. प्राइमरी हेमियोस्टेटिस में क्या होगा? लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शंस एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा. इट विल इन्वॉल्व लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन. लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शंस एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. वही सेकेंडरी वाला क्या इंक्लूड करेगा? कोएगुलेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ब्लड क्लॉट. कोएगुलेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर स्टेबल ब्लड क्लॉट. यानी 2 स्टेप ऑफ हेमियोस्टेटिस में पहला वाला है प्राइमरी, दूसरा वाला है सेकेंडरी. प्राइमरी क्या करेगा? लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शंस करवाएगा एंड ऑल्सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. एंड जो सेकेंड वाला है वो क्या करवाएगा? सेकेंडरी हेमियोस्टेटिस it will help in coagulation involving the formation of a more stable blood clot. Now the second number question. The second number question is saying us fill in the blanks in the given figure. So in the given figure the first blank will be filled by XA. This one is XA and this one is prothrombin, hence the blank will be of thrombin. This one is prothrombin and this one is thrombin, and then this one is fibrinogen. So fibrinogen के help से जो बनेगा that will be in this blank and that is the fibrin. So prothrombin से thrombin and fibrinogen से fibrin and फिर उसमें cross linked fibrin clot. So this is the final common pathway. Moving to the third SAQ question. The third SAQ question is a closed circulatory system is required by all animals that will have high metabolism. Second one is in open circulatory system hemoglobin is not segregated from. So it is not segregated from interstitial fluid. Now we will move toward the SAQ4 and the SAQ4 is asking about tick the correct mark. The first question is stock volume. Stock volume is what? It is the volume of blood which is pumped by the left ventricle during a single heartbeat. Second question, cardiac output is equal to stock volume multiplied by heart rate. So cardiac output is equal to stock volume multiplied by heart rate. यानी stock volume multiplied by heart rate will be equal to cardiac output. Now the third number of question, fill up the blanks with the appropriate word from the text. The first one is
Sinoatrial node is a pacemaker of the heart. It is a pacemaker of the heart, and the electrical impulses starts at the small pieces of muscles and spread across both the atria. So first blank is pacemaker, second is atria. Now the second question: the heart, the impulse from the AV node is conducted through the bundle of His to the Purkinje fiber of the ventricle. So heart में इन द हार्ट इम्पल्सेस जो है एवी नोड से वो कंडक्ट होते हैं कहाँ से कहाँ. सो बंडल ऑफ हिस से Purkinje fiber तक, बंडल ऑफ हिस से Purkinje fiber तक टू द वेंट्रिकल. Okay, now we will discuss the fifth question, the fifth SEQ question. The fifth SEQ question is, the first one is, arteries generally have a larger diameter than veins. It's false. Capillaries are made up of a single layer of endothelium cells surrounded by the basal membrane. So it's true statement. The artery near the heart are more elastic and dampen the oscillations in the blood flow. It's true. Whole blood is more viscous than the plasma because of the presence of blood cells. So yeah, it is true. The maximum pressure during the heartbeat is the systolic pressure. So yeah, it is true. The maximum pressure during the heartbeat is the systolic pressure. The maximum pressure during the heartbeat is known as diastolic pressure. No, it's false statement. Because maximum pressure को हम systolic बोलते हैं, तो diastolic कैसे बोल सकते हैं? Hence, it is a false statement. So by now we have discussed all the SEQ questions, and now we will move toward the summary discussion. The summary discussion. The first point is, in this unit, you've studied that plasma, interstitials, and intercellular fluid mix up the body fluid in animal, and these fluid are mostly water but differ from each other in their solute compositions. का मतलब है कि प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल, इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है, जो बनाता है बॉडी फ्लूइड को, ठीक, एनिमल्स में ये फ्लूइड मोस्टली वाटर होता है, बट एक दूसरे से डिफर करते हैं उनके सॉल्यूट कॉम्पोजिशंस पे, यानी सॉल्यूट का कॉम्पोजिशंस अलग अलग होगा सब में. Now circulatory system can be divided. Second one is कि circulatory system को डिवाइड कर सकते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज में. सबसे पहला ओपन एंड दूसरा क्लोज. ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है, ओपन जो सर्कुलेशंस हैं, ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड यूजुअली कॉल्ड हेम्योलिम्फ एंड इज पंप्ड बाय द हार्ट इनटू द स्पेसेस वेयर द ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ बाय इट. ओपन का मतलब होता है कि ब्लड जो है यूजुअली उसको हेम्योलिम्फ बोलेंगे, एंड क्या होगा सब आपस में मिल करके पंप्ड करेगा, पंप्ड करके एक ही जगह पे भेजेगा, यानी कि यहाँ पे कोई कैपिलरीज नहीं होंगे. यहाँ पे ब्लड पंप्ड होकर के आया और एक ही जगह पे आकर के मिक्स हो गया, डायरेक्टली बाथिंग एक ही जगह पे मिक्स हो गया. वही अगर ब्लड प्रेशर लो इन सच सिस्टम में ब्लड प्रेशर लो होता है. बट अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन की, तो क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड पंप होता है हार्ट से, जहाँ पे वेसल्स होंगे, एंड फिर वो आर्टरीज में पास करेगा, वेन्स में पास करेगा, कैपिलरीज में पास करेगा. तो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ होगा. ब्लड जो है प्रेशर यहाँ पे हाई होगा इन दी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई होगा, एंड फ्लूइड जो लीक करके अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस is returned to the circulations by the special vessels forming the lymphatic system. And now the rest portion of the summary along with terminal questions I will discuss in the next video. That's all for today. Thank you everyone.